Salam friends, today our topic is the Urdu translation of Unit 2 Iqbal message to youth. So let's the listen. Iqbal is one of the most outstanding poet and philosopher of the Indian subcontinent. His intellectual genius has reigned supreme in the era of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a dynasty for themselves. He was very much aware of the fact that if youth of Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pitch of subjugation earlier than they did. Young generation is the standard bearer of any nation. If their energy is channelized in proper direction, it can bring sea change in the social, political, and economic fabric of the nation. Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. Iqbal is one of the most outstanding. Outstanding means Shandar ya Mumtaz, poet, shair, philosopher or falsafi. Philosopher means falsafi of the Indian subcontinent. Indian subcontinent means बरसगीर पाक व हिंद. इकबाल बरसगीर पाक व हिंद के मुमताज़ शायरों और फ़लसफ़ियों में से एक थे. His intellectual genius means दानिशवराना काबिलियत, has reigned हुकूमत करना, supreme आला, in the era of Islamic philosophy, era दौर या ज़माना, during the 20th century and will direct means रास्ता दिखाना, रहनुमाई करना, and influence means असर डालना, the Islamic intellectual tradition, intellectual दानिशवराना tradition, रिवायात in the 21st century as well. 20वीं सदी के दौरान उसकी दानिशवराना काबिलियत इस्लामी फ़लसफ़ा के मैदान में सबसे आला व बरतर रही और 21वीं सदी में ये इस्लामी दानिशवराना रिवायत पर असर अंदाज भी होगी और रहनुमाई भी करेगी. इस sublime means शानदार, poetry means शायरी, and philosophy फलसफा, inspired means जज्बा पैदा करना. million of Muslim to wake up means बेदार होना, to the reality means हकीकत of time, वक्त, and forge means बनाना, destiny तकदीर, किस्मत, for themselves अपने आप के लिए. आपकी अजीम शान शायरी और फ़लसफ़ा ने लाखों मुसलमानों को वक्त की नज़ाकत हकीकत से आगाह करके मुतासर किया और उनको जदोजहद करके अपनी तकदीर बनाए. He was very much aware of the fact means हकीकत, aware आगाह होना, that if the youth of Ummah has structure means बनाना, their real destiny असली किस्मत तकदीर, then they could have led the Muslim of subcontinent, led means रहनुमाई करना, out of the pitch means गड़ा, of subjugation गुलामी, earlier than they did. अगर उम्मत मुस्लिमा के नौजवान अपनी हकीकी मुकद्दर खुद बनाते हैं तो फिर वो बरसगीर के मुसलमानों को गुलामी के गड़ी से बाहर निकाल चुके होते. Young generation means नस्ल, is the standard bearer, कीमती असासा of any nation means कौम. नौजवान नस्ल किसी कौम का कीमती असासा होते हैं. If their energy is channelized means इस्तेमाल करना, in proper direction सिमत, तरफ, it can bring change, sea change means बड़ी तब्दीली in social, political and economic fabric of the nation. अगर उनकी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल किया जाए तो किसी कौम के माशी, सियासी
اور معاشرتی میدان میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں۔ کیپنگ دس ویو ان مائنڈ، اس خیال کو ذہن میں رکھ کر، اقبال فوکس آن دی، اقبال نے اپنی توجہ مرکوز کی، فوکس توجہ مرکوز کرنا، آن دی کریٹیو انرجی، تخلیقی توانائی پر، آف دی یوتھ، نوجوانوں کے، ان اس پوئٹری، اپنی شاعری میں۔ اس خیال کو ذہن میں رکھ کر اقبال نے اپنی شاعری میں اپنی توجہ نوجوانوں کے تخلیقی توانائی پر مرکوز کی۔ تھینکس۔